RSSDI Research Society for the Study of Diabetes in India केवल मधुमेह संपर्कीय गवेषणा दिगरे एक उत्सर्गीकृत संगठन आम देश कहीं सारा विश्व में यह संगठन को मिली स्वीकृति और सुख्याति दीर्घ 54 वर्ष पूर्व रोपण होता क्षुद्र बीज एवं परिणत होती एक महद्रुम जुलाई मास 29 तारिख 1972 मसीहा है यार प्रतिष्ठा दिवस आउ कटक ठारे एही तारिख रे ही पालन करा जायछि यार 54तम प्रतिष्ठा उत्सव। प्रथमे नेशनल RSSDI र समस्त पूर्वतन सभापति एवं निर्वाचित सभापति समेत पृष्ठपोषक मानक स्वागत करथिले प्रोफेसर डाक्टर सिद्धार्थ दास एवं समस्त अतिथि को स्मारक प्रदान पूर्वक जणाइथिले आंतरिक शुभेच्छा। खुशी और गर्वर कथा यह जे SCB मेडिकल कॉलेज भेषज विभाग प्रोफेसर डाक्टर BB त्रिपाठी यही संगठन रे प्रतिष्ठाता सदस्य। भारतवर्ष में डायबिटीज अनुसंधान और चिकित्सा विषय रे प्रथम करी गोटे संस्था तैयारी होता 1972 मसीह। संस्थार ना इंग्रेजी में कहते रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज ताने मधुमेह विषय अनुसंधान करी तथ्य बाहर करी रोगी मान भल पाई औषध और चिकित्सा एवं रोगी मान केमती व्यवहार करेंगे केम चलिए ये सब विषय कहवाई जनवाई यही संस्था तैयारी होता सेतबले प्रोफेसर MMS आहूजा न्यू दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट प्रोफेसर BB त्रिपाठी ये सब मिसिकी से ये संस्था आरंभ करते जदियो से डायबिटीज एसोसिएशन थिला इंडिया रे से साधारण केस करते किंतु ये संस्था सब अनुसंधान करी पाठ विषय बहुत नुआ जिनस जनइले तो मेंबर संख्या बहुत कम थिला लोक अनुसंधान प्रति इच्छा नाला आजिकल बहु संख्यार मधुमेह डाक्तर हेले से समस्ते नुआ नुआ अनुसंधान करी चिकित्सा प्रणाली ठीक करने को चाहूँगी से RSSDI मेंबरशिप बढ़ीगला। भारत वर्ष प्राय सब प्रदेश ये संस्थार ऑफिस मान अच्छी मझे मझे से प्रति वर्ष मिलिकी नुआ नुआ तथ्य जोगाड़ करोगाड़ को छापिया दौरान याद्वारा मधुमेह रोगी चिकित्सा बहुत उन्नति आसूची उन्नतिटा मधुमेह रोगी केवल जापर साधारण लोक जापर ये संस्था कौन कर प्रति प्रदेश में डाक्तर माने जार चिकित्सा करने को इच्छा अच्छी मधुमेह रोगी की सब मिलमिशिक काम कर क्रमवर्धिष्णु मधुमेह और उपजुवा जटिलता को नियंत्रण करने दिगरे गोष्ठीगत स्तर में आलोचना एवं गवेषणात्मक निर्यास दिगरे सबुबले व्रती यह जातीय अनुसंधान अनुष्ठान। I am PV Rao. I retired as a professor of endocrinology from Nizam Institute of Medical Sciences in Hyderabad. I was involved with RSSDI since 1983. I was the longest serving secretary of RSSDI for about 17 years. And right now I am a patron. I have been a past president. So RSSDI was founded originally by MMS Ahuja from Delhi and also by BB Tripathi from here, from Cuttack. So BB Tripathi is a great celebrity in the field of medicine. He has done with limited resources in those days in Odisha state, he has conducted epidemiological studies on diabetes in rural population, in different populations of Odisha who used to have a lot of information about diabetes, especially from lean diabetes from the state of Odisha. I hope and wish the younger population in this state will take up what has been done by the senior people and continue developing, collecting information about the present status of diabetes among rural population of Odisha, how to make their lives better, how to improve their nutrition. Is it possible to do a prevention study? Is it possible to do any prevention by diet or by lifestyle achievement? So that kind of research studies have to be done by the younger population. This is a basic
suggestion and advice we are giving on behalf of RSSDI today. ମଧୁମେହର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ଏହି ସଂଗଠନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ ଏହାର ସଫଳ ନିର୍ଯାସ। I am Dr. G.R. Sridhar. I have been associated with the RSSDI for more than 40 years, from the time it was an infant. Small society, focused mostly on research. But even then, back then, the founder and the founders, Professor M.M.S. Ahuja, Professor Tripathi, Professor Sam G.P. Moses, and Vishwanathan, they had focused on the research aspects. We used to have regular conferences every year. And the strength of those conferences was Professor Ahuja used to publish a journal. It was then called Diabetes Bulletin, in which all the information from India was gathered and published. So that at the end of 10, 20, 30, 40 years, we have all the previous information that were published in the earlier journals. Later on, those journals were digitized, and the society website gives access to these journals from the very beginning. I had participated in various ways when I was working with Professor M.M.S. Ahuja. I was a postman, a proofreader, a correspondent, call it what it is. Technically, although I was the associate editor of the journal, I was participating in most of the production and activities of the journal. Later, as the society grew and it was more formally structured, Dr. P. V. Rao, who was the secretary for a long time, he suggested that the trajectory of the society changed when more number of members were recruited, so that the organization became strong. And as you have heard, there are more than 10,000 members as of now, making it one of the largest physician-associated diabetes societies in the world. Along with this, and more importantly, Dr. Siddhartha Das took upon himself to update the constitution, because when it first started, the constitution was quite skeletal, and he had put in enormous efforts in which the constitution had been fleshed out, and it is on a much more robust base. That, with the passage of time, has been strengthened further by the wisdom of its members. Starting as a foot soldier, by and by I was the joint secretary of the society, vice president of the society, president of the research society for the study of diabetes in India. Along with being the unofficial assistant editor of the Diabetes Journal, I had taken upon the responsibility as the editor-in-chief of International Journal of Diabetes in Developing Countries. Considering the reach and the scope of the journal, it was renamed as the IJDDC, or the International Journal of Diabetes in Developing Countries. That's when digitization started. The other editors-in-chief who had taken over, Dr. Madhu, Dr. Makkar, then Dr. Rajiv Chawla, they are taking it into much greater heights and putting it on a much firmer footing. At the same time, Dr. Chandalia, who was the editor-in-chief of the RSSDI textbook of diabetes, entrusted me the job of being the executive editor of the
third edition of the textbook. It's a well recognized textbook, now in its sixth edition, being edited by a series of reputed, knowledgeable editors in chief. The next edition is due out. Having started small, those who have taken up the reins have increased its scope and its possibilities in many directions which could not have been imagined back then. There's a lot of work in terms of research, and true to its name, the Research Society gives substantial grants to researchers from all over India. So if there is a good research project, it is put through a review process and substantial sums of money are provided to them. A number of very important research proposals were accepted, they were carried on, and they have all been published. In addition, as the president of the society has said, there has been a lot of outreach in terms of spreading word, in terms of increasing the educational status of those who are going to deal with patients with diabetes, as well as gaining traction in the international arena. So now what we could do is to have a more wider reach, because after all, diabetes or obesity is not treated in the doctor's consultation room. It needs to go into society. Rather than trying to treat obesity or trying to treat diabetes, what we need to do is to try to prevent it in the first place, because treatment is far more difficult than prevention. And so to do this, the whole society has to be involved. It's not just the doctors or the medical societies or the organizations. It has to pass into society that one has to eat proper food. It doesn't have to be costly. And then perform physical exercise. This exercise may be in the form of walking, doing regular household works, doesn't need to have to go to the gym, and sleeping on time, having at least 7 to 8 hours of sleep every day, eating food on time, having a gap of at least 12 to 13 hours between meals. That is, you have your night meal at 7 o'clock, have your breakfast at 9 o'clock. That's a good treatment enough. All these don't need money. They need information, education, and discipline. If this message can be put out into society, it's possible that the number of people with obesity, number of people with diabetes would reduce, and the role for secondary treatment or tertiary treatment would be reduced. That is the goal of the society, and it has been recognized globally. Our society also recognizes it, and I hope that action would be taken to put these principles into practice. I wish the society all the best, and I am really happy to have been part of its long and eventful journey over the decades. ଆମ ଦେଶରେ ଆସନ୍ନ ମଧୁମେହର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମାନ କରି ତତ୍କାଳୀନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଏହି ସଂଗଠନ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ମୁଁ RSSDI संगे 1982 ମସିହାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। 83 ମସିହାରେ କଟକରେ ଏସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ତାର 10ମ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ମୁଁ RSSDI संगे ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ RSSDI ଭିତରେ ମୁଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେଲି ଗବେଷଣା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ମୋର ଅଧିକାଂଶ ନିଜର ଯେତେ ଗବେଷଣା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି, ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗ ରୋଗୀ ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି
जहाँ कहुए सिचुएशन पिकुलियर टू आवर ओन सिचुएशन तेणुक RSSDI उद्देश्य से रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया तेणु से संपृक्त हेली एवं हेकरी गुड़िए प्रोजेक्ट आम RSSDI थ्रू गवेषणा माक्त करूँ भल भल जर्नाल प्रकाशित होती यही समय तार संगठन रे भाग नहीं 2002 एवं 2003 मसीह दुई थर पे जातीय सभापति बा प्रेसिडेंट निर्वाचित होती एवं विगत 4 वर्ष है मुझे यार पैट्रन बा पृष्ठपोषक भाव निर्वाचित होती एवं यही जो आज जो 29 जुलाई हूँ आमर फाउंडेशन डे डायबिटीज से दिन 1972 मसीह डायबिटीज RSSDI रजिस्ट्रेशन होता दिल्ली में तेणु ये जो मैंने आमर पास्ट प्रेसिडेंट पूर्वतन सभापति थे जो मैंने 10 भारत वर्ष 10 जन होती पैट्रन जो मानकर डायबिटीज रिसर्च रे RSSDI रे ओतप्रोत संपृक्ति रही से पैट्रन आख्या दि जाए से निमंत्रण कर आमर गोटे मानस मंथन करा भविष्य में केमी डायबिटीज गवेषणा एवं रोगी चिकित्सा केमती आगे निशार क्षमा करें भारत वर्ष से आज जो कर्मशाला होता एवं एथिरे 12 जन ओडिशा बाहर जोग देते ओडिशा भितर प्रोफेसर क्षितिश चंद्र सामल सी जोग देते ये होचंती एंडोक्राइन डिपार्टमेंट रो ओडिशार प्रतिष्ठाता एवं आम विभिन्न प्रकार चर्चा कलु एवं आशा करुचु जे आज जहाँ आमर निष्कर्ष बाहरिला सेटा भविष्य ओडिशा भारत में डायबिटीज जनित गवेषणा पे बहुत सहायक है। नेशनल RSSDI समेत एवं प्राय प्रति राज्य में गढ़ी उठी राज्य शाखा एवं नियमित भाव आयोजन करा जाउछि मधुमेह संपर्क सम्मेलन। Hello everyone, I am Dr. Brij Makkar. I am one of the past presidents of RSSDI. I was president of RSSDI during 2023. It's indeed a great honor and privilege to have been part of the journey of RSSDI for a period of maybe more than 15 years. I joined RSSDI as one of the founder members of RSSDI Delhi chapter when I was treasurer of the chapter, and then I worked with the chapter in almost all the positions before I came to the central body, and then I was in the central body for almost again 10 to 12 years. And I feel great that I have been part of this great journey of RSSDI, the Research Society for Study of Diabetes in India, which has grown leaps and bounds over last more than 50 years. Started as a very small organization in 1972 with a membership of around 20 people. Now we have the organization having membership of more than 13,400 physicians. And with that kind of number, possibly we are the largest physician society for working for the cause of diabetes globally. And RSSDI, I'm sure you all know, is working on all the fronts relating to diabetes, whether it is public awareness or education or screening or physician education or paramedic education or supporting research, and also working on advocacy. And now we are working with international collaborations also to have our voice not only in India but also globally. I wish RSSDA to grow strength to strength from here onwards, and I would be very happy one day once we are the largest and the best organization for diabetes physicians globally. विश्वर एक अग्रणी अनुसंधान अनुष्ठान भाव में RSSDI रही सुनाम कहीं केवल मधुमेह संपर्क गवेषणा दिगरे यह जारी रखी यार निरलस यात्रा। मैं डॉक्टर SV मधु हूँ। RSSDI का मैं 2015 में प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। उससे पहले विभिन्न जिम्मेदारियों का निभाया मैंने। सेक्रेटरी 2006 से 6 साल तक मैं सेक्रेटरी रहा और उससे पहले जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा, और जनरल का जो ऑर्गेनाइजेशन का जनरल का एडिटर इन चीफ भी रह चुका हूँ 6 साल। RSSDA फाउंडेशन डे पिछले 2 साल से मनाया जा रहा है।
पहला RSSDI फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन पिछले साल दिल्ली में हुआ, जो 53वां फाउंडेशन डे RSSDI का था 29 जुलाई को, वो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। और ये दूसरा है जो कटक में प्रोफेसर सिद्धार्थ दास ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया ये फाउंडेशन डे का आयोजन किया। ये RSSDI फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य दो हैं। एक उद्देश्य ये है कि RSSDI का सफ़र जो 1972 से चालू हुई थी और अभी तक 2026 तक लंबा सफ़र रहा है, और हर दशक में उसके अलग अलग पहलू हैं, और जो चीज़ 10-15 मेंबर से स्टार्ट हुआ अब 13,000 से भी ज़्यादा अधिक मेंबर्स इसमें हैं। तो एक उद्देश्य ये है कि हम इस बैठक में मिलकर चर्चा करते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा, पहले का सफ़र में क्या कठिनाइयाँ थी, और बीच का सफ़र कैसे तय हुआ, और अब आगे तक कहाँ पहुँचे। दूसरा उद्देश्य इस फाउंडेशन डे का ये था कि सीनियर जो मेंबर्स थे RSSDI के, जैसे कि पास्ट प्रेसिडेंट्स हों या पेट्रन्स हों इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब मिलके चर्चा करें और सोसाइटी को आगे ले जाने में मदद करें और मार्गदर्शन दिखाएं। तो आज की मीटिंग भी इसी तरह से सुबह से इस पर चर्चा हो रही है, और तरह तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं बाय ऑल द सीनियर्स, और ये सुझाव फिर इकट्ठे करके करंट लीडरशिप इस पर चर्चा करेगी अपने एग्जीक्यूटिव में, और आगे ये निर्णय करेगी आगे के 10 साल में या 5 साल में RSSDI का दिशा क्या होना चाहिए। RSSDI, जैसे औरों ने भी बताया, प्राइमरीली एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और 2004 से हम रिसर्च ग्रांट्स देते जा रहे हैं, और तब से अब तक शुरू में हमने मामूली से ग्रांट्स 1-1.5 लाख की शुरू की थी, अब कई लाखों तक पैसे दिए जाते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने के लिए विभिन्न डॉक्टरों को डायबिटीज़ में जो रुचि रखते हैं, और इस तरह से हम जो प्राइमरी गोल RSSDI का है वो निभा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जिक्र करना चाहूँगा जो इंडियन प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ स्टडी कहलाता है, जो RSSDI का खुद का एक प्लान्ड स्टडी थी। कई साल पहले RSSDI के लीडरशिप ने तय किया कि हमें एक ऐसा स्टडी प्लान करना चाहिए इस कंट्री के लिए, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके प्रिवेंशन के लिए इंडियन ट्रेडिशनल मेजर्स को इस्तेमाल करते हुए, बिना बहुत ज़्यादा खर्चे या दवाई के, हमें ऐसी कोई रिसर्च करनी चाहिए जिससे शायद देश को फ़ायदा हो। तो हमने योगा और फेनुग्रीक या मेथी सीड्स पाउडर का प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ पे रिसर्च किया, और इस पे RSSDI का योगदान बहुत महत्व रहा है, और शायद ही किसी और रिसर्च प्रोजेक्ट में RSSDI ने इतना इन्वेस्ट किया हो पैसे और टाइम, और उसका रिज़ल्ट इतना बढ़िया निकल के आया है। वेरी रिसेंटली उसकी पब्लिकेशन हुई है, और ये पाया गया कि योगा डायबिटीज़ को कम से कम 40% से रोकता है, अगर योगा तरीके से किया जाए, सिर्फ 40 मिनट प्रतिदिन व्यायाम के साथ। और 3 साल की ये स्टडी रही, और ये पाया गया कि करीब करीब 40% डायबिटीज़ का रोकथाम हो सकता है। तो ये मैं RSSDI का बहुत बड़ा उपलब्धि मानता हूँ, और इसी तरह से हम चाहते हैं, और हम यही सलाह भी देने भी वाले हैं कि आगे जाके ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट RSSDI को प्लान करना चाहिए जो कि देश के काम आए, और RSSDI का नाम और भी रोशन ना ही देश में बट इंटरनेशनली भी हो। धन्यवाद। आकुमारी हिमालय प्रतिटी राज्यरू अनेक वर्ष धरी एही संगठन रहिछन्ती अनेक ख्यातिसंपन्न मधुमेह चिकित्सक और गवेषक आउ आज भी अछन्ती सक्रिय। I'm Dr. Rajiv Chawla. I'm past president RSSDI and also past chair RSSDI Delhi chapter. Currently, I'm serving as editor-in-chief International Journal of Diabetes in Developing Countries, which is a RSSDI owned Springer journal. And I've been associated with RSSDI now for close to 30 years. And I remember that since early days, there has been a sea change in not only the way RSSDI works, but also growth has been extremely tremendous. When I joined RSSDI and initially worked as EC member and subsequently as joint secretary and secretary, there were less than 3,000 members. Today the membership has already exceeded more than 13,000, and we have close to 25 chapters now of RSSDI. When I was president of RSSDI, I initiated the rural
village adoption program, and 2 villages were adopted in my presidentship, one at near Lucknow and one in Rajasthan, Kuchaman. So since then we have been working for the growth of RSSDI, and we are trying to encourage lot of research by young scientists. And even now, as an editor-in-chief of IJGDC, we try to encourage lot of manuscripts which come from postgraduate researchers, young scientists or PhD students. And through this message, I once again invite all the researchers not only to get engaged with RSSDI, seek grant from RSSDI, but also try to publish their work in RSSDI own journal, that is IJGDC. ଜାତୀୟ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ଡିଆଇର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ସଭାପତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ଦାସ, ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ପିଭି ରାଓ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସରିତା ବଜାଜ। I am Professor Sarita Bajaj, former Director, Professor and Head, Department of Medicine, Motilal Nehru Medical College, Prayagraj. Currently, I am a consultant endocrinologist. I have been part of RSSDI for over 3 decades. The founder of RSSDI, Professor MMS Ahuja, in 1972 established RSSDI, which is the largest body of researchers and academicians, largest healthcare professionals the world over. I've had the pleasure of being Dr. MMS Ahuja's student in AIMS when I did my DM in endocrinology. As president of RSSDI in 2015, I have conducted many programs across the country. RSSDI is doing a phenomenal amount of work across the country, whether it is in education, in the digital platform, every possible field they have tried to approach. There are many guidelines that they have published, and there are conferences. They've also started for the last 5 years a separate conference basically focusing on research that is called the RSSDI Research Retreat. Currently, I am also patron of RSSDI for the last 1 year, and that is a special privilege. So this meeting organized today by Professor Siddharth Das and Dr. Goenka is very special because it is the RSSDI Foundation Day, 54th Foundation Day, and it's a privilege to be here in Bhubaneswar with most of the past presidents and current patrons. It's been a great meeting. ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପଦପଦବୀରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ। Greetings to all. I am Dr. Rakesh Sahai. I was president of RSSDI in 2024 and have been associated with this organization for more than 30 years now, and it's my very proud privilege today that we are celebrating the 54th Foundation Day of RSSDI. RSSDI, as we all know, stands for Research Society for Study of Diabetes in India, and it was founded 54 years ago on this day, that is 29th of July in 54 years ago, and this organization has been growing by strength to strength and has more than 13,000 members today. This is the largest organization in the world working for diabetes. So diabetes, as we know today, is a huge problem across the world, and in India particularly we have got 100 million people or 10 crore people with diabetes. And the most important thing is that half the people don't know that they have diabetes. Therefore, we have to screen people, identify diabetes, because diabetes itself is preventable and all its complications, all the problems that happen because of diabetes are preventable. So if we are able to identify diabetes well, treat it well, we can prevent the complication. That is why RSSDI is working very hard on this, in this direction. Odisha RSSDI, every state has a chapter of RSSDI. The Odisha chapter of RSSDI is very active. They have got more than 500 members, and today we have come here today because Dr. Siddharth Das, the patron of RSSDI, has organized this program,
and along with Dr. Goenka, who is the chairman of the state Odisha RSSDI, he has been very kind to invite us for this important program. And this whole organization, the RSSDI Odisha chapter, is working very hard to spread the message of about diabetes across the state and identify people early, treat them effectively, and see that we are giving a better life to people with diabetes. So we want to spread this message, see that everybody becomes aware about diabetes and prevents diabetes, because diabetes happens in people who have got a family history of diabetes, those who are sedentary, those who are not eating unhealthy diet. And today, with all our lifestyle, we are prone to diabetes, and therefore we need to take special attention to prevent diabetes by by being more active, eating a more healthy diet, and sleeping well, as many people have said. So this is important, and that is the important message that we want to spread today on this Foundation Day of RSSDI. We want to spread the message to everybody, each and every person in this country, that diabetes is something which can be prevented easily. We need to be aware, and we need to screen ourselves, follow a healthy lifestyle, prevent diabetes. So thank you once again to the entire Odisha chapter of RSSDI, particularly our patron Dr. Siddharth Das and Dr. Goenka for organizing this important meeting to see that all of us are here and we spread this message about diabetes. Thank you. RSSDI द्वारा वर्ष तमाम विभिन्न राज्य राज्य स्तरीय सम्मिलनी एवं वर्षर थरे जातीय सम्मिलनी आयोजन करा जाई विशेषज्ञ मानक करा जाई थाए जुगोपयोगी। मैं डॉक्टर अनुज माहेश्वरी, प्रेसिडेंट RSSDI। मैं लखनऊ से आया हूं और मैं यहां पर 54वें हमारे जो फाउंडेशन डे की सेलिब्रेशन के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारे सभी पास्ट प्रेसिडेंट और पैट्रन्स भाग ले रहे हैं। आज के दिन 54 वर्ष पहले RSSDI की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना दिल्ली में डॉक्टर MMS आहूजा और उनके साथ के उस समय के लोगों ने की थी। तब से अब तक ये ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च और उसके प्रमोशन के लिए डेडिकेटेड रहा है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में बाकी के मुकाबले में थोड़ा फ़र्क यही है कि हम लोग सिर्फ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। पिछले 1 वर्ष में हम लोगों ने रिसर्च के डायरेक्शन को थोड़ा बदलने की कोशिश की है। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च में RSSDI पिछले 50-52 वर्षों से सक्रिय रूप से भाग ले रहा था। अब हमारा उद्देश्य रियल वर्ल्ड डाटा और ख़ास तौर से जो छोटे क्लिनिक में और सामान्य डॉक्टरों के द्वारा जो रिसर्च की जा सकती है, जिससे अधिक से अधिक भारतीय डाटा हम लोग इकट्ठा कर सकें। आज मैंने इस कार्यक्रम में बहुत सारे अपने सीनियर लोगों को ये कहते सुना कि 54 वर्ष पहले इस संगठन की स्थापना इसलिए की गई थी जिससे कि हम हिंदुस्तानी डाटा को, हिंदुस्तानी रिसर्च को एकत्रित करके और भारत के लोगों के हिसाब से डायबिटीज़ के इलाज का कुछ तरीका खोज सकें। पर आज 50 वर्षों के बाद भी हम लोग अभी भी यूरोपियन सोसाइटी और अमेरिकन सोसाइटीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। उसकी मुख्य वजह यही है कि शायद हमें जितना डाटा इकट्ठा करना चाहिए था अपने लोगों के द्वारा, वो शायद हम नहीं कर पाए। तो हमारा प्रयास यही है, एज ए प्रेसिडेंट मेरा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करें जिसमें एक सामान्य मेंबर ऑफ RSSDI भाग ले सके। 13,000 मेंबर हैं इस समय RSSDI के, और अगर सभी लोग 10-10 पेशेंट का डाटा भी इकट्ठा करके हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा का पूल बन जाता है, और इस तरीके से हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। इधर हमने ग्रामीण विकास के लिए भी कुछ कोशिशें की हैं, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में डायबिटीज़ की खोज और उसके इलाज के तरीके निकाल सकें, क्योंकि वो अभी तक अनअटेंडेड हैं, उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। जो भी डाटा हमारा इकट्ठा होता है वो शहरी इलाके से ज़्यादातर इकट्ठा होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपने सभी मेंबरों से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो अधिक से अधिक गाँवों को अडॉप्ट करें, और वहाँ पे एक हमने उनको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम दिया है जिसके अनुसार वो 3 साल के लिए उस कार्यक्रम को चला करके और उसके बाद उसके नतीजों को RSSDI के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे सबमिट कर सकते हैं और उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम एक शुरू किया है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि भारत एशिया और एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के बीच में एक नेतृत्व करने वाली स्थिति में पहुँचे। अभी तक हमारी जो
इमेज है वो एक फॉलोअर की इमेज बनी हुई है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो डायबिटीज़ है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ से काफ़ी अलग है और हमारे लोगों का खान पान भी वेस्टर्न कंट्रीज़ से काफ़ी अलग है। तो हम जो यहाँ पर अपने यहाँ लोगों के लिए जो मार्गदर्शन डायबिटीज़ के इलाज के लिए देते हैं वो हमारे बाकी एशियाई देशों के लिए एक नज़ीर बने, इसकी हमें एक प्रयास करने की आवश्यकता है और वो हमने शुरू किया है, जिसके लिए हमने 2 कार्यक्रम ऑलरेडी अपने एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के साथ किए हैं और तीसरा कार्यक्रम हम श्रीलंका के साथ अगले महीने करने वाले हैं और उसके बाद हम लोगों के और भी कई एशियाई देशों के साथ एक जॉइंट प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये 2 हमारे विभिन्न बिल्कुल डिफरेंट स्पेक्ट्रम के 2 छोरों पे एक तरफ हम रूरल आउटरीच और दूसरी तरफ हम ग्लोबल आउटरीच के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने इस बार वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें हम लोगों से अपेक्षा करेंगे कि वो अपना HbA1c चेक कराएं और साथ में हीमोग्लोबिन भी चेक कराएं और अपना ब्लड शुगर चेक कराएं, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि भारत के अंदर एवरेज HbA1c इस समय कितना है। तो इतने कार्यक्रम है, इसके अलावा भी कई बहुत सारे कार्यक्रम हैं, पर इस समय की कमी की वजह से मैं आपको 3 कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से मैंने बताया और बाकी कार्यक्रमों के बारे में हम फिर दोबारा कभी बात करेंगे तो आपको बताएंगे। धन्यवाद। दिनकु दिन द्रुत गति बढ़ी चली मधुमेहर प्रादुर्भाव एवं जटिलता तेबे यार नियंत्रण और सफल चिकित्सा दिगरे सदा चेष्टित उत्सर्गीकृत प्रतिष्ठान। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता। आई एम अ नेशनल RSSDI's president elect of the organization, and this is one of the organization जो कि वर्ल्ड लेवल पे 1st 2nd नंबर पर आती है, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड फिजिशियंस इसके मेंबर्स हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी इसकी मेंबर्स हैं। यह जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मैं मेंबर करीब 30 सालों से हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ द, आई फील ऑलवेज प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक आज हम इसका 29 जुलाई को आज हम उसका 54वां फाउंडेशन डे और बर्थडे मना रहे हैं। और हमारे जो जितने भी इसके पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, इसके जो पैट्रन हैं, इन लोगों ने इसका लीगेसी इतनी स्ट्रांग बना के रखी हुई है कि आज भी यह ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में अपना नाम किए हुए है। इसका मेन पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का है, इट स्टार्टेड एज ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इट्स कॉल्ड ए रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया। पर धीरे धीरे पर जब रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों ने इस पर रिसर्च चालू किया, एकेडमिक वर्क चालू किया, मीटिंग्स ली, पर धीरे धीरे ये भी रियलाइज़ हुआ कि हमें पब्लिक तक भी पहुंचना है। तो पिछले कुछ डिकेड से पब्लिक अवेयरनेस पर भी काफ़ी कुछ काम यह ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। इसमें हर वर्ष हमारे इस समय करीब 13 से 14 हज़ार मेंबर्स इस समय हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और उनका नंबर ऑलरेडी बढ़ते जा रहा है। इसमें यंग लोग भी आजकल काफ़ी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहे हैं। तो हमारे देश में यदि हम देखा जाए तो डायबिटीज़ इज़ बीइंग कॉल्ड एज इंडिया इज़ कॉल्ड एज 2nd कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। और यह उसी तरह हमारे प्री डायबिटीज़ वाले भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं लोग। और हमारे देश में बाकी देशों की तुलना में 10 साल पहले डायबिटीज़ आता है, 10 साल पहले ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट अटैक यंग लोगों को होता है, किडनी जल्दी ख़राब होती है, आँखों के ऊपर असर होता है, ब्रेन के ऊपर असर होता है। ये सभी कॉम्प्लिकेशन इसीलिए होते हैं, शायद हम डायग्नोसिस लेट करते हैं, शायद हम जो हमारे ABC टारगेट होता है कि आपने A1C कंट्रोल करो, शुगर कंट्रोल कीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कीजिए, वजन कंट्रोल कीजिए, डाइट कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये जो बेसिक फार्मूला है डायबिटीज़ का या मैनेजमेंट का, एक जो बेसिक डिसिप्लिन है, उस अनुशासन को शायद हमारी देश की जनता उस रूप से जिस तरह से एग्रेसिवली उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, शायद नहीं कर पाते हैं। और RSSDI का यह आज की तारीख में एक प्रकार से डेडिकेशन है कि हमारे प्रेसिडेंट से लेकर, पास्ट प्रेसिडेंट से लेकर तो पैटर्न तक के हर व्यक्ति इस अवेयरनेस के कैंपेन में जुड़ा हुआ है। कहीं हम लोग रूरल आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, तो कभी हम स्कूल का एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं, नर्सेस को एजुकेट करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को एजुकेट करते हैं, एजुकेटर्स क्रिएट करते हैं। और यह प्रोग्राम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेट्रोज में हो रहा है या अर्बन जगह के लोकेशन में हो रहा है, यह रूरल, सेमी रूरल और इवन कुछ जगह हमने आदिवासी एरियाज़ में भी काम करने की कोशिश करी है। तो RSSDI का जो कमिटमेंट है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द रिसर्च बट ऑल्सो, एंड वी ऑल्सो सपोर्ट द रिसर्च ग्रांट्स एंड रिसर्च projects of various newer people, younger people across the country. Any medical college, कोई भी आए, कोई भी मेडिकल कॉलेज का यदि कोई रिसर्च स्कॉलर है और वो डायबिटीज़ रिलेटेड कोई भी अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट देखता है,
उसे भी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पर सपोर्ट करती है। इसी तरह जो लोग ऑल ओवर इंडिया सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट हो, उन्हें भी कहीं ना कहीं रिकग्नाइज़ किया जाता है। हमारी खुद की जर्नल होती है, 2 जर्नल्स हैं और दोनों जर्नल्स में भी लोगों के रिसर्च और ओरिजिनल आर्टिकल्स दिए जाते हैं। इसी तरह एक रिपोजिटरी भी बनाई हुई है हमारे वेबसाइट पर, जो आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको हर तरह के अपडेटेड आर्टिकल जो है डायबिटीज़ में मिलते हैं, स्पेशली जो इंडियन ऑथर्स के आर्टिकल सभी उसमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो लोग हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डायबिटीज़ वाले हैं, जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये चाहें तो उसके मेंबर बन भी सकते हैं। यदि आप नहीं हैं मेंबर तो आपने मेंबरशिप उसमें ड्राइव करनी चाहिए। यदि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, कहीं भी हो, चाहे आप उड़ीसा में करें, चाहे भारत देश के किसी भी कोने में करें, उसे भी हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली के रूप में हमारे टीम मेंबर्स, हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हम सब यदि मिलकर काम करेंगे तो हम अपने देश को, जो आज की तारीख में सेकंड कैपिटल माना जाता है, और शायद यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो अगले 5-10 सालों में हम लोग शायद हाईएस्ट नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो हमें यदि उससे बचना है तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आइए, इस समय हम बैठे हुए हैं कटक में, डॉक्टर सिद्धार्थ दास का ने हमारे पैट्रन है, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट हैं, RSSDI हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उनके तत्वाधान में आज यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और यह बात कर रहे हैं कि हमारे देश को हमने डायबिटीज़ के इस क्लिष्ट जो अवस्था है उससे कैसे बचाना, कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचाना, प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ के कन्वर्शन में कैसे बचाना, इस पर आज पूरे पास्ट प्रेसिडेंट बैठ के संगोष्ठी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और यह निर्णय फिर हमारी नेशनल EC में बैठकर फिर से इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होगा और उसको फिर नेशनल लेवल पर हम लोग, जब नवंबर में हमारी मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी बेंगलोर में, उसमें हम लोग फिर से इस पर चर्चा करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, वॉट एवर इज बीइंग सजेस्टेड बाय आवर पैट्रन्स एंड द पास्ट प्रेसिडेंट्स। सो दिस इज द व्यू पॉइंट, दिस इज द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, and I appeal all of you to please join us. If you are a healthcare professional, if you are paramedical, there are some norms. You please join us for this cause for the awareness in diabetes. And if you are an NGO, if you are NGO हैं, आप कोई ऐसा सोशल वर्क कर रहे हैं छोटी छोटी जगह में, कोई टाइप 1 डायबिटीज़ पर, कोई प्रेगनेंसी डायबिटीज़ कर, कोई टाइप 2 डायबिटीज़ कर, कोई ओबेसिटी पर, कोई चिल्ड्रन अवेयरनेस पे और एडोलेसेंट अवेयरनेस पे, कहीं भी आप काम कर रहे हैं और आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपका स्वागत करेगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कर सकती है, जिससे हमारे देश में एक हमने अवेयरनेस का जो मिशन चलाया हुआ है उस पर हम लोग सक्सेसफुली काम कर सकें। विद दिस आई स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। अगेन 54th फाउंडेशन डे ऑफ RSSDI इज 29th of July, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ जुड़े हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच। और आज तो गुरु पूर्णिमा है, तो सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, उन्हें चरण स्पर्श कि आज आपने इतने शुभ दिन पर यह कार्यक्रम रखा है, जिस पर हम लोग, आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।